different act and their year of passing along with the objective and some important definition under the act. So first, name of act and year of passing. First one is the Pharmacy Act 1948. So this Pharmacy Act 1948 was passed with the objective. What was the objective? इसका कारण क्या था? क्यों आया ये act? To regulate the pharmacy profession in India except Jammu and Kashmir. So this act is applicable. This act is applicable for all the states of India except Jammu and Kashmir. सभी एक्ट जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, कश्मीर के लिए एप्लीकेबल नहीं थे. कब तक? जब तक मोदी जी ने वो कलम नहीं हटाया. अभी वो कैसा है? अभी सब एप्लीकेबल हो गए उनको, पहले ये एप्लीकेबल नहीं थे. सो अप टू दैट जो 360 हटाया ना मोदी जी ने, फार्मेसी एक्ट 1948. सो इट वाज केम इन द फोर्स. It was passed with the objective of to regulate the pharmacy profession in India. Now this under the Pharmacy Act you have different chapters. Okay, under this Pharmacy Act you have different chapters. Chapter 1 is known as introductory. Chapter 2 is known as a PCI, Pharmacy Council of India. Chapter 3 is the State Pharmacy Council. Chapter 4 is the registration of pharmacist. Chapter 5 is the miscellaneous. कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 चैप्टर 3 कंसिस्ट ऑफ डैश डैश. नीचे ऑप्शन में देंगे आपको इंट्रोडक्शन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और देंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट. कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऐसे आता है, या फिर आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि चैप्टर as per the chapter 3rd of Pharmacy Act 1948 it prescribes or it gives what chapter 3 will give State Pharmacy Council. याद रखो चैप्टर 1 में क्या आता है? चैप्टर 1 में आता है इंट्रोडक्शन. चैप्टर 2 में क्या आता है? चैप्टर 2 में आता है आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मेंबर्स, उसका फंक्शन, सब कुछ आया उसमें. नाउ अंडर द चैप्टर 3 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, then its member, then function and all that. Okay, under chapter 4 of this Pharmacy Act, registration procedure for pharmacist. Then under chapter 5 of this Drug and Pharmacy Act 1948 miscellaneous. Second is nothing but the Drug and Magic Remedies Act 1954 and rules. So it is also known as the Objectionable Advertisement Act. So it was passed in the 30 April 1954. तो इसके ऊपर भी पासिंग कब हुआ है उसका क्वेश्चन आता है. सो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट was passed in the 30 April 1954. It was passed with the objective of controlling and prohibiting the advertisement related to magic remedies which alleged to possess magic qualities. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, डोंट वरी. ये मैजिक रेमेडी जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल एंड प्रोहिबिट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज. आप देखो, आपको अगर कोई टाइफाइड हो गया, अभी तो ये नहीं चलता लेकिन पहले जमाने में बहुत चलता था कि कोई बाबा आएगा, बाबा बोलेगा ये ले लो, ये ताइत ले लो, या फिर ये जड़ी बूटी ले लो, या फिर ये मंत्र ले लो, या फिर ये कवच ले लो. मैजिक रेमेडीज लाइक talisman, type, sacred threads, kavachas, etc. So, according to that Baba, it possesses miraculous power to clear the disease, but actually it is not. ऐसा कुछ होता नहीं है ना. जैसे आपको बुखार होगा तो बाबा के पास जाएंगे, बाबा बोलेगा बच्चा डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा. कैसे होगा बाबा? दवा लेना पड़ेगा. So if he is giving you any kind of talisman, any kind of tithe, any kind of sacred things, धागा बांधेगा आपका हाथ के ऊपर, या कवचा, so that is, or any other charm, so which possesses a miraculous power to cure the disease. Actually वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन that is known as magic remedy to control the advertisement, है ना. नहीं तो आ जाएगा आपके यहाँ पे कोई पोस्टर देखा होगा, बंगाली बाबा, चमत्कार बंगाली बाबा, कोई भी जुना पुराना डिसीज वो क्लियर कर देगा बंगाली बाबा, पकड़ो उसको और पीटो. 30 April 1954, Drug and Magic Remedies was the Drug and Magic Remedy Act, that is Objectionable Advertisement Act, was passed with the objective to control and prohibit the advertisement of magic remedies which alleged or does not possess any magic powers. So under this Magic Remedies Act there are 2-3 definitions. So what do you mean by magic remedies? So magic remedies means like talisman,
talisman or taith or sacred threads or kavcha or any other charm which possess a miraculous power to cure the disease. That is known as magic remedy. What is meant by advertisement? इसका definition भी कभी भी पूछते हैं. So what is advertisement? Advertisement means any notice or circular or label or wrapper or any other document and any announcement made orally or by means of producing or transmitting light or sound. कुछ भी अगर नोटिस लगा दिया आपने वहां पे कि नहीं मेरे पास डायबिटीज का इलाज होता है, हिमालयन बाबा, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, आपको फाइन पड़ेगा. एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और एनी अदर डॉक्यूमेंट एंड एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड और ट्रांसमिटिंग लाइट. नहीं तो होता है ना, वो कोई एक रिक्शा लेके आता है, बंगाली बाबा 10 रुपए में जोड़ोगा दर्द ठीक कीजिए. दैट इज एडवर्टाइजमेंट. सो एडवर्टाइजमेंट मीन्स एनी notice, circular, label, wrapper or any document and any announcement made orally or by means of producing sound or transmitting light. That is advertisement. These are the definition under this act. Next one is nothing but the Drug and Cosmetic Act 1940. Drug and Cosmetic Act 1940 and rules under 1940. So it was passed with the objective to control the import, manufacturing, sale of drug and cosmetic. इसके अंदर भी बहुत सारे डेफिनेशंस है. इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि आप अडल्टेटेड ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, गवर्नमेंट एनालिस्ट, देन ड्रग इंस्पेक्टर. तो इसके अंदर बहुत सारे डेफिनेशन है. इसका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन डिटेल में देखेंगे इन अपकमिंग लेक्चर. नाउ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट. नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985. It was passed with the objective to control the operation related to narcotic drugs and psychotropic substances. Okay, so this act also divides into 6 chapters and 83 sections. Next one is the Medicinal and Toilet Preparation 1955. It is also known as the Excise Duties Act. Medicinal and Toilet Preparation Excise Duties and rules under 1956. So it was passed with the objective of provisions for levy and collection of excise duties on medicinal and toilet preparation containing alcohol, opium or Indian hemp or any other narcotic drugs. So it was passed on a 1st April 1947 and it was came into the force in 1955. It has 11 chapters and 721 sections. Next one is the Industrial Development and Regulation Act. It was passed with the objective of this monitoring and it was passed with the objective of monitoring, bulleting and developing the industrial activity in the country. Now drug price control order was passed in the 1995 with the objective of to control the prices of drug. Drug is categorized under essential commodity under the section 3 of Essential Commodity Act 1955. ये याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So drugs is categorized as an essential commodity under the section 3 of Essential Commodity Act 1955. Next one is the Prevention of Food Adulteration Act 1954, rules 1955. So it was passed with the objective to prevent the import, manufacture or sale or distribution of adulterated, misbranded food and also prevent all type of food adulteration. होता है ना कि दिवाली का समय आ गया तो आपको एक न्यूज मिलेगी, हर साल वो फेवरेट न्यूज होती है. यहाँ पे नकली खोया पकड़ा गया. यहाँ पे नकली खोया मतलब वो अपना क्या होता है उसका मराठी हिंदी बोलो मी मराठी विसरून खवा जो असतं ना खवा म्हणजे दुधापासून बनवलेला, ज्याच्यापासून पेढा बनवतात, पेड़ा या मिठाई कोई भी बनता है उससे जो खवा होता है या फिर जो खोया होता है. तो आपको जैसे दिवाली आता है नजदीक एक न्यूज आता है पेपर में, नकली खवा पकड़ लेगा. टू प्रिवेंट द adulteration of food, Prevention of Food Adulteration Act 1954 was passed. Now Medical Termination of Pregnancy Act 1971. Medical Termination of Pregnancy 1971 was passed with the broad objective to prevent the termination of pregnancy by registered medical practitioner for bona fide reason. नहीं तो पहले क्या होता था, कोई भी आके डॉक्टर है तो चलो कर दो अबॉर्शन, ऐसा नहीं. बोनाफाइड रीजन के लिए ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हो.
बोनाफाइड रीजन मतलब क्या, वैलिड रीजन होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि इफ द प्रेगनेंसी इज बिकॉज ऑफ द रेप, so at that time if pregnancy is less than 12 weeks then it can be terminated. Okay, if the pregnancy keeping the pregnancy will harm to the mother, कि अगर प्रेगनेंसी रखेंगे तो माता जी को फिजिकल एंड मेंटल हरेसमेंट, मेंटल एंड फिजिकल डैमेज हो सकता है, तो वो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। द चाइल्ड वांट टू बी हैविंग मल्टीपल डिसेबिलिटीज, अगर वो बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ है, अगर वो उसका जन्म होगा तो उसके हाथ पैर नहीं होंगे या फिर कोई abnormality होगा, at that time you can terminate the pregnancy, but that is known as a bona fide reason. Okay? So medical termination of pregnancy act 1971 was passed with the objective to provide a termination of pregnancy by registered medical practitioner for a bona fide reason. Next one is the Patent Act 1970. The Patent Act 1970 came into force 20 April 1972 with the objective as to make India trade related intellectual property rights, ट्रिप्स बोलते हैं उसको, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, विद द ऑब्जेक्टिव एज टू मेक इंडिया ट्रेड ट्रिप्स राइट्स कंप्लीट by providing the exclusive marketing rights till the product patent is brought। जैसे इंडिया में होता है 20 साल के लिए पेटेंट ग्रांट करते हैं, सो इफ यू आर फाइलिंग द पेटेंट फॉर 20 years, so you will be the whole and sole पेटेंटी। एक साल मतलब 20 साल के लिए वो आपका ही पेटेंट रहेगा, उसको दूसरा कोई क्लेम नहीं कर सकता, तो फिर दूसरा कुछ बना नहीं सकता 20 साल तक। और 20 साल बाद दैट विल बी रिजॉल्व एज अ पब्लिक पेटेंट, बाद में कोई भी आके बना सकता है, 20 साल तक आप उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। फॉर दैट पर्पज पेटेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1970। द ऑब्जेक्टिव टू मेक इंडिया ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी rights complaint by providing exclusive marketing rights till the product patent is brought or till the product patent are brought। Then next one is the Poison Act 1990। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, when the Poison Act was passed। Poison Act was passed in the 1990। इसके याद क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। What was the objective of this act? To regulate and control the possession for sale and any specified poison। तो आप इसका जो एक्ट है पॉइजन एक्ट 1990, इट वाज पास टू रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट, पोजेशन, सेल ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइजन। सो एनीवन हु possesses the poison and also sells the poison unlawfully, अगर लॉ के बाहर जाके वो लॉ तोड़ के अगर वो कोई पॉइजन लेता है या फिर पॉइजन साथ में रखता है या फिर सेल करता है without license or breaks the condition for license is punishable with imprisonment of 3 months and fine 5,000 on the first conviction. On the subsequent conviction, imprisonment of 6 months or fine of 1,000 or both. In prevention of animal cruelty, to prevent the infliction of unnecessary pain, suffering on animals, to prevent the cruelty of animals. This act was passed. Prevention of animal cruelty. Then AICTE Act, All India Council for Technical Education Act 1987. So it was enacted on the 15th December 1987, and it is a corporate body. Head office of AICTE is at Delhi. It is the head office of AICTE, Delhi, and it has a 51 members. AICTE में क्या है 51 members होते हैं. So 3 out of that 51, 3 AICTE officials, 15 ex officio members, 31 is nominated members, and 2 members are the members of parliament। ठीक है, आउट ऑफ 51 एआईसीटी में क्या होता है कि 51 मेंबर्स होते हैं, उसमें के तीन जो है एआईसीटी ऑफिशियल्स होते हैं, 15 एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं, 31 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, एंड 2 पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। उसके बाद में उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। विल सी दिस पार्ट इन द आफ्टरनून, विल सी द रिमेनिंग पार्ट इन द आफ्टरनून। 15 मिनट हो गए, ठीक, चलो ले लेते हैं। चलो, डिफरेंट शेड्यूल्स अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। एक सिंपल है, आपको जस्ट रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन इसके ऊपर भी बहुत बार आ चुके हैं। सो नॉर्मली डिफरेंट शेड्यूल्स अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स अंडर। तो ये जो एक्ट में 2 मेन शेड्यूल है आपके, शेड्यूल फर्स्ट, ओके, शेड्यूल टू द एक्ट, दैट इज शेड्यूल टू द एक्ट, एंड बाकी क्या है शेड्यूल्स टू द रूल। आप बोल रहे हैं कि आप अगर पूछेंगे शेड्यूल ये क्या है, तो इट इज अ शेड्यूल टू द रूल
ओके, इट इज शेड्यूल टू द रूल एंड शेड्यूल टू द एक्ट क्या है, शेड्यूल है, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड. व्हाट इज शेड्यूल फर्स्ट? इन द शेड्यूल फर्स्ट, reference books for Ayurvedic, Siddha and Unani medicine as it is आ चुका है GPAT 2021 में. शेड्यूल फर्स्ट टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग. ऑप्शन में था लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स और आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन. याद रखो यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसके अंदर दो शेड्यूल आता है, शेड्यूल्स टू द एक्ट. शेड्यूल्स टू द एक्ट दो शेड्यूल आता है. फर्स्ट वन इज शेड्यूल फर्स्ट, सेकंड वन इज शेड्यूल सेकंड. व्हाट इज शेड्यूल फर्स्ट? शेड्यूल फर्स्ट में क्या रहेगा आपका, तो यहाँ पे देखो लिखा है शेड्यूल्स टू द एक्ट. उसमें एक्ट के लिए वहाँ शेड्यूल क्या है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन. सेकंड शेड्यूल क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, स्टॉक और स्टोरेज ऑफ ड्रग्स. उसके बाद में शेड्यूल्स टू द रूल्स. अंडर द शेड्यूल्स टू द रूल्स, रूल के अंदर कितने शेड्यूल है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल ई, एफ है ना, जी, एच, ए, शेड्यूल के, एम, एन, ओ, पी, शेड्यूल क्यू, शेड्यूल आर, देन शेड्यूल टी, शेड्यूल डब्ल्यू, देन शेड्यूल एक्स, शेड्यूल वाई, इनके शेड्यूल होते हैं. तो एक वन बाय एन. सबसे पहले कि याद रखो इसमें एक ट्रिक होता है. ये मान लीजिए कि आपका 12th हो गया है, अभी आप बी फार्म के लिए एडमिशन ले रहे हो, वैसे लेना नहीं चाहिए लेकिन ले रहे हो. पहले क्या करना पड़ता है आपको, पहले अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, तो शेड्यूल ए कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स. पहले क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा. तो शेड्यूल ए कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एप्लीकेशन, रिन्यूअल एंड ग्रांट ऑफ लाइसेंस. एप्लीकेशन के लिए कौन सा फॉर्म में करेंगे एप्लीकेशन, इसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद में रिन्यूअल के लिए कौन सा एप्लीकेशन करेंगे और लाइसेंस ग्रांट होने के लिए कौन सा एप्लीकेशन ग्रांट करेंगे. तो उसका फॉर्म्स जो है, सो ऑल काइंड ऑफ फॉर्म्स. So first you have to apply, and for application you need a form, application form. Schedule A consists of different forms for application, renewal, grant and other activities. एक बार आपने एप्लीकेशन किया तो आपका एडमिशन मिलता है क्या, नहीं. दूसरी आपको क्या करना पड़ता है, फीस भरना पड़ता है वहाँ पे, तभी जाके वो आपको पढ़ाई करने देंगे. After application you have to pay the fees. So what is schedule B? B is nothing but the fees charged by analysis. Fees charged for analysis by Central Drug Laboratory or serial or state drug laboratory for analysis. Now schedule C. Schedule C यहाँ पे आप याद रख सकते हो. C मतलब क्या है, schedule C मतलब C for care, C for care. schedule C for care. So care करना है आपको. क्यों करना है care? बिकॉज वो पेरेंटल प्रोडक्ट है, उसमें कंटेमिनेशन के लिए होना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना है. सो सी फॉर केयर. शेड्यूल सी मींस केयर. सी मींस लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजंस. बायोलॉजिकल्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट, उसमें आता है शेड्यूल C1. C1 में क्या है, अगेन वही. तो लिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजंस. शेड्यूल C1 लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स. ये भी याद रखो, पेरेंटल प्रोडक्ट्स कम्स अंडर शेड्यूल C एंड C1. तो इसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है. नेक्स्ट विल सी द शेड्यूल. नेक्स्ट शेड्यूल इज शेड्यूल D. नेक्स्ट शेड्यूल टू द रूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, शेड्यूल D. So what is schedule D? Schedule D consists of classes of drug which are exempted. Classes of drug which are exempted from the certain provisions under the act. कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर जो प्रोविजंस है, जो रूल है, उसके अंडर कौन से ड्रग एग्जेम्पशन है, उनका एग्जेम्प्टेड है. तो क्लास ऑफ ड्रग एंड एक्सटेंट एंड कंडीशन फॉर एग्जेम्पशन दैट इज गिवन इन द शेड्यूल डी. क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है 100%. हर बार क्वेश्चन आता है शेड्यूल्स पे. उसके अंदर है शेड्यूल D1, शेड्यूल D2. शेड्यूल D1 क्या है, अंडरटेकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, उसके ये शेड्यूल है D1. शेड्यूल D2 क्या है, अंडरटेकिंग बाय मैन्युफैक्चरर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट to be submitted along with the application form for obtaining a registration certificate for bulk drug. D1 क्या है, ये फॉर्मुलेशन के लिए है. So D1 is for formulation, D2 is for bulk drug. ठीक है. Now schedule E1. Okay, schedule E1. What is it? इसके रीडिंग क्वेश्चन आ चुका है. So list of poisonous substances under the Ayurveda, Siddha and Unani medicine.
मतलब आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी मेडिसिन में क्या क्या पॉइजनस ड्रग्स है, तो कोई बंगाली बाबा कोई भी जड़ी बूटी नहीं दे सकता, तो क्या होगा, आपको पॉइजनिंग हो सकता है, बिकॉज देर आर सर्टन herbal drugs which are poisonous in nature. So schedule E1 consists of a list of poisonous drug, yeah, the list of poisonous substances under the Ayurveda, Siddha, Unani medicine. For example, एक आता है आपका aconite. Aconite आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा aconite के alkaloids, aconitin वगैरह. तो aconite is a poisonous drug. So if it is present, it is a listed under Schedule E, list of poisonous substances. Now Schedule F. What is Schedule F? Schedule F is nothing but the requirement for operation in related to blood banks and blood components. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Requirement for operations related to blood banks and blood component is mentioned under following schedule as per the Drug and Cosmetic Act. ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर डायरेक्टली कैसा क्वेश्चन आता है आपको, एक डायरेक्ट आएगा या फिर आएगा मैच द फॉलोइंग शेड्यूल विद द रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विद द रिस्पेक्टिव कंटेंट. तो एक कॉलम में देंगे आपको शेड्यूल्स, दूसरे कॉलम में देंगे उसके अंदर क्या आता है. सो रिमेंबर शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ शेड्यूल विल गिव रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशंस रिलेटेड टू ब्लड बैंक्स एंड ब्लड कंपोनेंट. नाउ शेड्यूल F1 लेप में बहुत सारे आता है, लेप में आता है F1, F2, F3, FF. Schedule F1 is nothing but the provisions for bacterial, viral, vaccines, antiviral and diagnostic agent. Schedule F1 क्या है? Provisions for bacterial and viral vaccines, then antiviral diagnostic agent. Schedule F2 क्या है? Standards for surgical dressing. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है Schedule F के ऊपर. Schedule F1 क्या है? Schedule F2 क्या है? Schedule F3 क्या है? Remember Schedule F requirement for operations related to blood bank and blood component. Schedule F1 provisions for bacterial, viral vaccine, anti-sera diagnostic agent. Schedule F2 standard for surgical dressing. Schedule F3 standards for umbilical tapes. Schedule FF standards for ophthalmic treatment. ये शेड्यूल 4 जो है F के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इन द वेरियस एग्जाम्स. तो याद रखो इसको फिर से एक बार. शेड्यूल F पूरे शेड्यूल जो है शेड्यूल F, शेड्यूल F1, शेड्यूल F2 या शेड्यूल F3, शेड्यूल FF. ठीक है, शेड्यूल F इसमें ट्रिक लगाओ कि F क्या है? एक्शंस किसका होता है? ब्लड कंपोनेंट का, ब्लड कंपोनेंट का. तो F फॉर ब्लड एंड ब्लड बैंक्स रिलेटेड प्रोविजंस. F1 क्या है? तो वैक्सीन्स एंड डायग्नोस्टिक एजेंट. F2 क्या है? सर्जिकल ड्रेसिंग. F3 क्या है? अम्बिलिकल टिप्स. FF क्या है? ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन इज शेड्यूल G. Schedule G as per the Drug and Cosmetic Act and rules. It consists of a dangerous drug. Dangerous drug means what? Drugs required to be taken under medical supervision only. List of drug that you have to take under medical supervision only. That is given in the Schedule G. Dangerous drug. ठीक है, इससे आपका होता है ब्रोमफेनिकोल, के बाद में जैसे होता है आपका ऑक्सिन. There are a lot of drugs. It is a list of drug which you have to take under the medical supervision. Schedule H drug. Schedule H means क्या? Schedule H is consists of a list of drug known as a prescription drugs. Prescription drug मतलब क्या? These are the list of drug. They are only given by registered medical practitioner. They are only prescribed by RMP. Registered medical practitioner ही उसको prescribe कर सकता है. आप नहीं कर सकते. Registered medical practitioner नहीं हो. नेक्स्ट वन इज शेड्यूल J. इसके ऊपर कम से कम 3 या 4 बार क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इज शेड्यूल J? लिस्ट ऑफ डिसीज और एलिमेंट्स which are not to be claimed or purport to prevent or cure. होता है ना कि बंगाली बाबा आपके जोड़ों का दर्द ठीक कर देगा, बंगाली बाबा आपका डायबिटीज नॉर्मल कर देगा, आपका बंगाली बाबा कैंसर क्लियर कर देगा. कैंसर क्लियर होता ही नहीं है. शेड्यूल J क्या है? लिस्ट ऑफ डिसीज और एलिमेंट्स टू विच ए ड्रग शुड नॉट क्लेम और परपट टू प्रिवेंट और क्योर. मतलब ऐसे कोई ड्रग नहीं है कि इनको क्योर कर सकता है. तो ऐसे डिसीज कौन से, उसका लिस्ट क्या है? शेड्यूल J के अंदर है. शेड्यूल J जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, एपिलेप्सी हो गया, बहुत सारे. शेड्यूल J मींस लिस्ट ऑफ डिसीज और एलिमेंट्स ड्रग शुड नॉट क्लेम
और पर्पट टू प्रिवेंट और क्योर। तो इसके ऊपर कम से कम 2-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वन इज शेड्यूल के एज पर द एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल। व्हाट इज शेड्यूल के? ड्रग exempted फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। शेड्यूल एम, यहाँ पे इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आए। शेड्यूल एम, शेड्यूल एम, यम से आप को रिलेट करो, यम फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए? जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी रिक्वायरमेंट, देन फैक्ट्री प्रीमाइसेस रिक्वायरमेंट। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या लगता है? फैक्ट्री तो लगेगा ना, घर में थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री लगता है। मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट लेआउट, equipment required for the manufacturing, GMP requirements. So that is given under the Schedule M of Drug and Cosmetic Act and Rules 1940-1945 respectively. Schedule M is a GMP requirement for आपकी जो एलोपैथिक ड्रग्स है उसका। एलोपैथिक ड्रग, यहाँ पे लिखो एलोपैथिक ड्रग, शेड्यूल एम फॉर एलोपैथिक ड्रग। नाउ शेड्यूल एम वन, शेड्यूल एम वन इज नथिंग बट द सेम GMP requirement, plant premises, plant equipment etc. for homeopathic drug. Schedule M2, Schedule M2 is for same GMP requirement, plant equipment premises for cosmetics. Okay, Schedule M3, M3 क्या है? Same GMP requirements, plant layout and equipment required for medical devices. एक बार रिवाइज करता हूँ आपको यहाँ पे। Schedule M क्या है? GMP, good manufacturing practices, GMP requirement for manufacturing of drugs, manufacturing of allopathic drugs. ठीक है, तो in that along with the GMP requirement for factory premises, then plant layout, requirement of equipment etc. for allopathic drugs or modern medicines. Schedule M1, M1 क्या है? Same thing for homeopathic drugs, that is GMP premises, plant layout etc. equipment for homeopathic drug. Schedule M2 क्या है? M2 is for same thing for cosmetics, that is GMP premises, plant layout equipment etc. Schedule M3 क्या है? Same thing for your medical devices, so GMP premises, plant and equipment for medical devices. तो याद रखो इसको, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। शेड्यूल M1 किसका है? M2 किसका है? M3 किसका है? मैच द फॉलोइंग शेड्यूल M विद द रिस्पेक्टिव, क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, पेपर देख लो आप, हर साल में कुछ क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट वन इज शेड्यूल एन। तो आप यहाँ पे याद रखो, एन मतलब क्या? एन फॉर न्यू। न्यू, न्यू मतलब क्या? न्यू क्या करना है आपको? आपको नया फार्मेसी ओपन करना है। तो शेड्यूल एन, एन मीन्स न्यू, न्यू क्या करना है? फार्मेसी ओपन करना है, उसके लिए क्या लगेगा? रिक्वायरमेंट लगेगा। तो लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर efficient running of pharmacy, list of minimum equipment required for running pharmacy efficiently. What is schedule N? Schedule N means list of minimum equipment for running a pharmacy efficiently. उसमें list of minimum equipment required efficient running of pharmacy याद रखो। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ये शेड्यूल एम, शेड्यूल जे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल एम वाले जो पार्ट्स है ये पूरे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। शेड्यूल एन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, शेड्यूल ओ के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज शेड्यूल ओ? शेड्यूल ओ gives the standards for disinfectant fluid. Schedule O will give you standards for disinfectant fluid. क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इसके ऊपर। शेड्यूल पी के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज शेड्यूल पी? शेड्यूल पी will give you life period of drug. P for period, life period of drug, that is shelf life of drug. कितने फॉर्मुलेशन का कितना शेल्फ लाइफ होना चाहिए, लाइफ पीरियड कितना होता है, वो दिया है शेड्यूल पी के अंदर। शेड्यूल पी, it will give you life period of drug. It will prescribe the life period of drug. Now in that you have subtype schedule P1. For I think GPAT 2021 में क्वेश्चन आता है P1. So it give you pack size of drug. Schedule P, life period of drug. Schedule P1, pack size of drug. तो ऐसे याद रखो आप। Schedule P, life period of drug. Schedule P1, pack size of drug. Both are P means P for pack. लेकिन नॉर्मल शेड्यूल P, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, एंड शेड्यूल P1 मतलब ऐसा याद रख सकते हो, P1 मतलब एक पैक, मतलब क्या? एक पैक। जैसे होता है ना, मान लीजिए जैसे आपने अगर देखा होगा अल्बेंडाजोल सस्पेंशन, इफ यू, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन और नॉट, अल्बेंडाजोल सस्पेंशन। तो अल्बेंडाजोल सस्पेंशन जो होता है अब बच्चों में देने के लिए, वो एक 15 ml का बॉटल होता है।
तो उसका एक पैक साइज होता है, तो 15 ml, ठीक है, 15 ml का ही आता है, वो एक ही बार में आपको लेना पड़ता है, वो देना पड़ता है, जैसे पैक साइज ऑफ ड्रग। ओके, जैसे देख लीजिए कि कुछ कुछ टैबलेट का 3 का पैक होता है, 3 पैक, जैसे आपको आपने देखा होगा एजिथ्रोमाइसिन 500, उसका जो स्ट्रिप आता है उसमें 3 ही टैबलेट होते हैं, पैक साइज ऑफ ड्रग। So schedule P is related with the life period of drug or shelf life of drug. Schedule P1 is the pack size of drug. ऑलरेडी आ चुके हैं इसका। शेड्यूल क्यू, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। शेड्यूल क्यू, क्यू फॉर कोल tar dyes. क्यू, क्यू फॉर कोल tar dyes. It will give you list of colors, dyes, pigments permitted in the cosmetics and soaps. Next one is the schedule R. तो शेड्यूल आर मतलब क्या, आर फॉर रबर, रबर का क्या बनता है, रबर का बनता है कॉन्ट्रासेप्टिव। आर, शेड्यूल आर मतलब क्या, आर फॉर रबर, रबर से क्या बनता है कॉन्डम बनता है, आपका मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनता है। तो आर फॉर रबर लैटेक्स, ऐसा याद रखो। शेड्यूल यल, शेड्यूल आर फॉर रबर, रबर से बनता है कॉन्डम एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो आर फॉर रबर। नाउ व्हाट इज शेड्यूल R1? स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस, जो डिवाइसेस होते हैं मेडिकल डिवाइसेस उसमें भी रबर यूज होता है, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस, वैसा याद रखो। शेड्यूल एस, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, शेड्यूल एस स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल टी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। एक्चुअली इसके ऊपर क्वेश्चन एक तो कॉग्निटिव में भी आता है और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एक तो यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस का भी आता है। व्हाट इज शेड्यूल टी? जी, गुड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। शेड्यूल टी, GMP फॉर आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। आई थिंक ये क्वेश्चन आया था आई थिंक GPAT 2021 में। देन नेक्स्ट वन इज शेड्यूल यू, particulars required to be shown in the manufacturing record. Particulars to be shown in the manufacturing record of raw material and analytical record. It is related with the industry. Schedule U में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए रिकॉर्डिंग, जैसे रॉ मटेरियल का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, कैसे आया कहाँ गया, रॉ मटेरियल का एनालिसिस का रिकॉर्ड होना चाहिए। देन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, BMR बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, BPR बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, उसके बाद में एनालिसिस का रिकॉर्ड होना चाहिए, एनालिटिकल रिकॉर्ड। तो ये सब शेड्यूल यू के अंदर आता है। शेड्यूल U1 के अंदर क्या आता है? शेड्यूल U1, सो पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड तो है, रिकॉर्ड तो होना चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या लिखना चाहिए आपने, वहाँ पे बैच नंबर होना चाहिए, वहाँ पे लॉट नंबर होना चाहिए, वहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, वहाँ पे एक बैच में कितना टैबलेट या फिर कितना कैप्सूल या फिर कितना ml लिक्विड है वो होना चाहिए, पैक साइज क्या है वो सब डिटेल होना चाहिए उसमें। सो शेड्यूल U1 कंसिस्ट ऑफ, शेड्यूल U1 कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी shown in the manufacturing record. Then schedule V. What is schedule V? Schedule V is nothing but the standards for patent and proprietary medicine. And proprietary medicine उसका definition अपन बाद में देखेंगे proprietary. Now what is schedule W? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। Schedule W is nothing but the list of drug to be marketed under the generic name only. ठीक है, तो schedule W मतलब क्या, list of drugs that you have to market under the generic names only. For example, एस्पिरिन होता है आपका, एस्पिरिन का टैबलेट, तो एस्पिरिन के टैबलेट के ऊपर उसका ट्रेड नेम नहीं रहता, उसका लिखा होता रहता है एस्पिरिन टैबलेट IV। और एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको, क्लोरम्फेनिकॉल, तो क्लोरोमाइसिटिन या फिर क्लोरम्फेनिकॉल। आपने कुछ देखा होगा आइज एप्लीकैप आता है, जब आपका आइज में कंजक्टिवाइटिस का एक एपिडेमिक आता है उस टाइम पे वो आता है आइज एप्लीकैप, लिंगुली बोलते हैं मराठी में। तो ओके, सो उसके ऊपर लिखा होता है क्लोरोमाइसिटिन एप्लीकैप IP। वहाँ पे क्लोरम्फेनिकॉल का ब्रांड नेम नहीं रहता, वहाँ पे उसका जेनरिक नेम रहता है, ठीक है। क्लोरम्फेनिकॉल, उसके बाद में आपका एस्पिरिन आ गया, उसके बाद में फेरस सॉल्ट, जो भी फेरस सॉल्ट होते हैं जैसे फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, तो उसके ऊपर भी सिर्फ फेरस एस्कॉर्बेट रहेगा। शेड्यूल W मींस लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली। फॉर एग्जांपल 3 एग्जांपल मैंने तो अभी बोल दिया आपको, उसका और एक एग्जांपल है उसमें है या ये प्रोक्लोरप्राजिन। शेड्यूल X, शेड्यूल X मतलब क्या, यहाँ पे ऐसे आता है X मतलब क्या, X इज अ सिंबल। सिंबल किसके लिए होता है, देखो आप कोई भी अगर गवर्नमेंट का देखो उसके ऊपर ऐसा सिंबल रहेगा X, किसके लिए होता है X मतलब नो, नो किसके लिए बोलेंगे आप, नो फॉर नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। शेड्यूल X मींस नो,
नो शेड्यूल एक्स मींस नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, व्हाट इज शेड्यूल एक्स। आपको एक एग्जांपल देंगे जैसे डायजेपाम या फिर मॉर्फिन या फिर कुछ भी देंगे। सो दिस ड्रग कम्स अंडर द फॉलोइंग शेड्यूल एज पर द डीएनसी एक्ट। शेड्यूल एक्स नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स कम्स अंडर शेड्यूल एक्स। तो शेड्यूल एक्स जो ड्रग है, तो फॉर दैट आप जाके मांग लो कि मुझे डायजेपाम चाहिए, तो कोई देगा नहीं। So for that, Schedule X drugs they are okay. They are dispensed under the the prescription only. Registered medical practitioner, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। एमबीबीएस डॉक्टर या फिर उससे ज़्यादा डिग्री वाला, तो उसका प्रेस्क्रिप्शन अगर है तो ही आपको शेड्यूल एक्स ड्रग मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और उसके लिए भी प्रोविजन है कि आपको प्रेस्क्रिप्शन शुड बी इन अ ट्वाइस। प्रेस्क्रिप्शन जो है वो 2 प्रिंट में होना चाहिए। तो एक प्रिंट क्या करेगा, मेडिकल वाला उसके पास ही रख देगा। एंड डॉक्टर प्रेस्क्राइब द शेड्यूल एक्स ड्रग, so it should prescribe in the duplicate prescription. So one prescription should be written on the medical store and one prescription should be with the patient. तो ऐसा नहीं है कि साइकोट्रोपिक ड्रग है तो पेशेंट बार बार आके बोलेगा, मतलब ला 2 साल पहले चेकअप किया था, उस टाइम पे पेशेंट को बोला है कि डायजेपाम का 10 मिलीग्राम टेबलेट ट्वाइस अ डे, 2 साल से वो ले ही रहा है। तो ऐसा भी नहीं, फ्रिक्वेंटली 3 महीने के बाद। ओके, सो इफ एनी पेशेंट visit the stores and ask for schedule X drugs, and though he has a prescription but it is a old enough, 6 महीने पुराना है या 1 साल पुराना है, तो उसको ड्रग्स नहीं डिस्पेंस कर। सो ओनली इफ इट इज अ फ्रेश प्रेस्क्रिप्शन, नॉट लेस देन 3 मंथ्स। तो 3 महीने का प्रेस्क्रिप्शन है तो आप दे सकते हो उसको। अगर 6 महीने का है, 1 साल का है, तो उसको ड्रग्स नहीं दे सकते। नाउ व्हाट इज शेड्यूल वाई? शेड्यूल वाई इज नथिंग बट द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। शेड्यूल के ऊपर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सारा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। तो यू कैन, जैसे मैंने बोला कि ट्रिक्स क्या है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ए फॉर एप्लीकेशन, फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई, तो शेड्यूल ए कंस्ट ऑफ एप्लीकेशन। शेड्यूल सी, सॉरी शेड्यूल बी, एप्लीकेशन के बाद में क्या है कि आपको फीस पे करना है, शेड्यूल बी कंस्ट ऑफ फीस। शेड्यूल सी, सी फॉर केयर, so you have to take extra care for parentals and biological products. So schedule C consists of biological and parental products. ठीक है। शेड्यूल N for new, न्यू क्या है, न्यू फार्मेसी ओपन करना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी, दैट इज गिवन अंडर शेड्यूल N। देन शेड्यूल P and P1, P for period, okay, and P for pack, ये याद रखो, P for period, P for pack। So schedule P only, that is consists of a life period of drug। शेड्यूल P1 means pack size of drug। शेड्यूल आर, आर मतलब क्या, आर फॉर रबर। रबर से क्या बनता है, रबर से बनता है लैटेक्स, और रबर से बनता है कॉन्डम एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। सो शेड्यूल आर कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। देन शेड्यूल आर1, अगेन आर1 मतलब क्या, आर फॉर रबर। आर1 में क्या आएगा, सो स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, आर1 में मेडिकल डिवाइसेस आएगा। शेड्यूल एक्स मतलब नो, नो फॉर गवर्नमेंट सेज नो फॉर ड्रग ऑफ एडिक्शन एंड नार्कोटिक ड्रग्स। डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, वो अपन बाद में देख लेंगे। तो एक बार रिवाइज करो पूरा शेड्यूल्स, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ शेड्यूल्स आपको। डिफरेंट शेड्यूल्स अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स अंडर 1941। तो डीएनसी एक्ट के लिए मेन शेड्यूल 2 होता है, शेड्यूल्स टू द एक्ट। उसमें आता है शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल फर्स्ट विल गिव यू लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। शेड्यूल 2 standards for import, manufacturing, sale, stock और storage of drugs. Then schedule to the rule, उसमें आता है शेड्यूल ए for application। So different application form for either application, renewal, grant and other activities related to manufacturing, sale। Now schedule B consists of fees charged by government analyst, fees charged for analysis at the CDL or state government। C for care, list of biological and parental product। C1 may be a list of special product given by special provisions। और schedule next is the schedule D। D मतलब क्या है, classes of drug which are exempted from the provisions of drug and cosmetic act। So there are certain drugs which are exempted, उसमें exemption है, exception है उसको। वो ड्रग कहाँ पे आएंगे, शेड्यूल डी में, ड्रग क्लास ऑफ ड्रग एंड द एक्सटेंट एंड कंडीशन फॉर एग्जामिशन। D1 में क्या है, undertaking by manufacturer or his representative, authorization to be submitted with the application
for obtaining the registration certificate. D2 में भी सेम थी है. D2 is for bulk drug. यहाँ पे सिर्फ API के लिए है और ये formulation के लिए. E1 list of poisonous substances under the traditional system of medicine, that is Ayurveda, Siddha and Unani. Surely अब क्या है? Factory, that is the requirement for operations related to blood blank and component. ये for fraction किसका होता है? Blood fraction, ब्लड बैंक एंड उसके प्रोविजन कहाँ पे आएंगे? शेड्यूल एफ में. या फोन में क्या आएंगे? वैक्सीन्स एंड सेरा, वैक्सीन सेरा एंड डायग्नोस्टिकेशन. शेड्यूल एफ टू में क्या आएगा? सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग. एफ थ्री में स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टिप. एफ स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट. जी डेंजरस ड्रग्स, drug required to be taken under medical supervision only. Schedule H prescription drug, so drugs which are dispensed under the upon the prescription of registered medical practitioner. Okay. Schedule J list of disease and elements that a drug should not claim or purport to prevent or cure. तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है तो उसके अंदर ये शेड्यूल जे आता है. So drug should not purport or drug should not claim or drug should not to cure or prevent the disease. List of disease. Schedule K drug exempted from certain provisions related to manufacturing. Schedule M क्या है? Good manufacturing practices for allopathic drug. M1 for homeopathic drug, M2 for cosmetic, M3 for medical devices. Schedule N क्या है? Minimum equipment required for running of pharmacy. ओ क्या है? स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट. शेड्यूल पी क्या है? लाइपेरिन ऑफ ड्रग. शेड्यूल P1 पैक साइज ऑफ ड्रग. ठीक है. शेड्यूल क्यू क्या है? लिस्ट ऑफ कलर कोड डाइज एंड पिगमेंट फॉर कॉस्मेटिक्स एंड सो. शेड्यूल आर फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. R1 फॉर मेडिकल डिवाइसेस. ठीक है. शेड्यूल एस फॉर कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक. शेड्यूल टी GMP रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडिशनल ड्रग. तो यहाँ पे देखो आप टी का मतलब निकालो. टी मतलब क्या? ट्रेडिशनल मेडिसिन. ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम कौन सा है आपका? आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी. तो जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन. शेड्यूल यू क्या है? पर्टिकुलर्स टू बी शोन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड फॉर रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड. ये शेड्यूल U1 पर्टिकुलर्स टू बी रिक्वायर्ड टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड. शेड्यूल V क्या है? स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन. शेड्यूल W लिस्ट ऑफ ड्रग्स that can be marketed under generic name only. Schedule X narcotic and psychotropic drugs. Schedule Y requirement and guidelines on clinical trials for import and manufacturing of drugs. So this was today's session. We'll see remaining points in the afternoon.